Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. We are going to do today is very important MCQ question. MCQ question for class 6 science with the answer are prepared based on the latest exam pattern, and there is a NCERT new syllabus here, and which will be a very important for the exam point of view, and it will be important for the competitive exam also. Let's see what is our topic today. Today we discuss on most important chapter here, fun with magnets. Fun with magnet, class 6 cbse ncert here. Today the University Center discuss the most important MCQ question here. MCQ question for the NCERT basis, and most important there is a NCERT new syllabus here. You know that most important for the exam point of view, and that's important. The NCERT fun with a magnet MCQ question here. Attraction is a maximum at the. You know that question is very interesting here. The attraction is maximum at the. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सबसे अधिक चुंबक का आकर्षण कहाँ पर होता है। चुंबक का मैक्सिमम आकर्षण कहाँ पर होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चुंबक का आकर्षण मैक्सिमम कहाँ पर होता है। द ऑप्शन है सेंटर, बी पोल, सी बोथ ए एंड बी, and D none of these. Question is very interesting. Attraction is a maximum at the. You know that center. Center is right, but it is not a center here. The magnetic pole here, north south pole, not a center. It means to the option B is correct. Option B is correct. It's a poles. Attraction is a maximum at the poles, means south north pole. The B option is correct for this answer question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here: which of the following makes use of magnet? Which of the following makes use of a magnet? निम्नलिखित में से कौन चुंबक का उपयोग करता है। आपके समक्ष चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि चुंबक का उपयोग कहाँ पर होता है। चुंबक का उपयोग कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए शॉर्ट बटन, ऑप्शन बी स्क्रू ड्राइव, ऑप्शन सी अ कैन ओपनर, डी a door stopper. You know that question is very interesting. The makes use of magnet. A short button? No, it is not a correct answer. Short button is a magnetic use here, nothing here. A screwdriver. Screwdriver use a magnetic power there a little bit. It means a little bit is a not a use a magnet little bit here. It means to B option not a correct. C a can opener, no way. Can opener not a use a magnet here. It means to the option D is remind here. A door stopper. Yes, it is a correct answer here. A door stopper. D option is correct. The makes of use of magnet. The magnet use of the door stopper. A D option is correct here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here: the two ends of magnet are called. The two ends of magnet are called. क्वेश्चन यहाँ पर है कि चुंबक के दोनों सिरों को हम क्या कहते हैं। चुंबक में जो नॉर्थ और साउथ होती है उसको हम साधारण लैंग्वेज यानी एक शब्द में क्या कहते हैं। चुंबक में जो दो सिरे होते हैं नॉर्थ और साउथ, उन पोलों को हम क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पोल्स, बी स्ट्रेंथ, सी नॉर्थ एंड डी साउथ।
You know that question is very interesting. The two ends of the magnetic are called, two ends here, north and south. It means D and C, north and south. But two options not are correct here. North or south is correct, but options is another two here. The strength, no way, it is not a correct answer. A pole, yes, it is a correct answer. The two pole is a north-south, simply language is called poles. The two ends of the magnet is called pole. A option is correct. A is a pole is correct. Let's see. Next question here. Next question on your screen. Question here. A bar magnet is immersed in a heap of iron filings and pulled out. The amount of iron filling clingings to the. Question understand? A bar magnet is immersed in a heap of iron of fillings and pulling out. The amount of iron filling clinging to the. एक क्षण चुंबक को लोहे के गुर्दे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर निकाला जाता है। लोहे के छिलके की मात्रा चिपकी हुई होती है। किस कारण से चिपकी हुई होती है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया है। क्वेश्चन समझ में आया? साधारण शब्दों में मैं समझाऊं आपको तो ये क्वेश्चन कहता है, अगर एक क्षण के चुंबक को लोहे के अगर हम टुकड़ों के ढेर में डुबा देती हैं, एक चुंबक को हम लोहे के ढेर में अगर हम डुबा देते हैं और हम बाहर निकालते हैं, डुबाने के बाद हम बाहर निकालते हैं तो लोहे के टुकड़े जो हैं उस पर चिपक जाते हैं। आखिर लोहे के टुकड़े क्यों चिपके, उस पर किस कारण चिपके हैं? तो ऑप्शन है यहाँ, नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल। बी, नॉर्थ पोल इज अ मच मोर देन टू द साउथ पोल। सी, नॉर्थ पोल इज अ मच लेस देन द साउथ पोल। एंड डी, magnet will be a same all along with pedal length. You know that question is very interesting. Question is very interesting. You know that the mostly is a north-south pole is role here, but A option is correct. North pole is almost equal to the south pole. North pole is almost equal to south pole. This reason, the amount of iron filling climb to there. The north pole is almost equal to the south pole. A option is correct for this question. A is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. A freely suspended bar magnet rests in. You know that question is very interesting. A freely suspended bar magnet rests in. क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित बार चुंबक किसमें स्थित होता है? अगर एक बार मैग्नेट है तो वो किस दिशा में जो है रहेगा? एक स्वतंत्र रूप से निलंबित बार चुंबक कहाँ पर स्थित होगा? दो ऑप्शन है यह, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, डी एनी डायरेक्शन ऑफ द चांस. Know that question is important. A freely suspended bar magnet rests in. Know that magnet is the most important characteristics here. There is a north and a south pole here, and the south north pole is direction is the most important. It means to the north south direction is correct answer, not a east west direction, not a north east direction, not a any direction of the chance. The A option is correct here. North south direction. A option is correct for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here, which of the following can be converted into the magnet? Which of the following can be converted into a magnet? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चुंबक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? आपके समक्ष चार ऑप्शन है
और इन 4 ऑप्शनों में से आप किसको जो है चुंबक में परिवर्तन कर सकते हो, यानी किसको चुंबक बना सकते हो। आपको सोचना है कि हम किसको चुंबक बना सकते हैं। द ऑप्शन है आयरन, बी वुड, सी स्टोन, डी क्ले। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट। द clay is not a convert to the magnet, and a stone nothing is convert to the magnet, and wooden nothing. The iron only there is convert to magnet. Option A is correct. Iron is convert to magnet. A option is correct for this question. Next question on your screen. Question here. B can use a magnet to separate. B can use a magnet to separate मीन अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। हम अलग किस में से चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पर हम चुंबक का उपयोग जो है कर सकते हैं किसी दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिए, यानी चुंबक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी दूसरे पदार्थ को अलग करने के लिए। द ऑप्शन है रबर बैंड फ्रॉम अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल, बी पीस ऑफ कॉपर वायर फ्रॉम अ ग्लास बीड्स, एंड स्टील स्टेपलर फ्रॉम सैंड, एंड डी आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड। नो दैट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। वी कैन यूज अ मैग्नेट टू सेपरेट, बट आंसर है डी iron filling from a sand. The magnet attract to the iron. Magnet attract to the iron. Magnet not attract to the aluminum fuse, false glass beads, steel stapler, and sand. There is a use iron filling from a sand. It means the D option is correct. The magnet separate to the iron filling to the form of sand. D option is correct here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Magnetic compass is also called. Magnetic compass is also called. मैग्नेट कंपास भी कहा जाता है। किसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको चुनना है कि मैग्नेटिक कंपास हम किसको कहते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्शन, ऑप्शन बी मैरिनर कंपास, सी मैगलेव, या डी नोन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड, you know that answer here B, mariner's compass. B option is correct for this question. Magnetic compass is also called mariner compass. B is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Which of the following item cannot be picked by a magnet? Which of the following item cannot be picked by a magnet? क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस वस्तु को चुंबक द्वारा नहीं उठाया जा सकता। आपके समक्ष जो 4 ऑप्शन है आप उसमें से एनालाइज कीजिए कि इनमें से किसको जो है चुंबक के द्वारा आप नहीं उठा सकते हो। चुंबक के द्वारा हम किसको नहीं उठा सकते हैं। द ऑप्शन है हेयर पिन्स, बी पेपर क्लिप्स, सी आयरन नेल्स, डी एल्युमिनियम फॉल्स। You know that question is very interesting. The item cannot be picked by the magnet. Hairpin, there is a magnet, the picked here. It means A option is correct. But examiner is asks the question cannot be picked. Hairpin is a picked. And B, paper clip. Paper clip is also picked here. And C, iron nails. Yes, iron nails is a picked here. It means A, B, C is a picked. But examiner is ask the question cannot be picked here. It means to the aluminum falls is not a picked here. It means the option D is correct. Option D is correct. Aluminum falls is not a picked here. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. Dash type of magnet is used in a
crayons to lift a heavier container from the sea? Question is very interesting. Dash type of magnet is used in a crayons to be lift a heavier container from a sea. जहाज से भरी हुई कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन में डैश प्रकार के मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। आपने समुद्र किनारे देखा होगा, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो बड़े बड़े कंटेनर को उठाने के लिए हम मैग्नेट का उपयोग करते हैं। और उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जहाज़ों से भरी हुई कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन में किस प्रकार की मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बार मैग्नेट, ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रो मैग्नेट, डी हॉट शूज मैग्नेट। You know that question is important and NCERT basis here. NCERT new syllabus here. The bar magnet is a simpler magnet and B cylindrical magnet. Yes, it is correct here. Cylindrical magnet types of magnet is used to the cross to lift a heavy container to sea. Cylindrical magnet is correct. Option B is correct for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The nerves in our body transmit a message as a dash. The nerve in our body transmits messages as a dash. Mean हमारे शरीर में तंत्रिका संदेश को डैश के रूप में प्रसारित की जाती है, भेजी जाती है। मान लीजिए आपको कहीं कांटे चुभ रहा है, तो इसका जो है नर्वस सिस्टम हम तक कैसे जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, यानी हमारे शरीर में तंत्रिका संदेश को किस प्रकार पहुंचाती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ऑप्शन बी रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी नॉट। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. The nerves in our body transmit a messages as a electrical impulse. The answer here electrical impulse. A option is correct. Electrical impulses here. That's the correct answer. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. The word magnet is derived from to the old French word. You know that question here, the word magnet is derived from the old French word. Mean चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। जो चुंबक आप शब्द बोलते हो वो फ्रांसीसी के शब्द से किस शब्द से लिया गया है। चुंबक जो है फ्रांसीसी शब्द है और फ्रांसीसी के किस शब्द से लिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया, किस शब्द से लिया गया है। ऑप्शन ए मैग्नीशिया, ऑप्शन बी मैंगोस, ऑप्शन सी मैग्नेट, ऑप्शन डी मैग्नेटियम। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. द वर्ड मैग्नेट इज derived from to old French word. The old word here it mean to the option C is correct. Magnet. Option C is magnet is correct. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. What happen when we hit a magnet with a hammer? What happen when we hit a magnet with a hammer? जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े से मारते हैं तो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान है कि जब आप किसी चुंबक को हथौड़े से पीटिएगा तो चुंबक में क्या हो जाएगा, चुंबक क्या करेगा। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द ऑप्शन है ए इट इज़ अ गेन अ मोर मैग्नेट फोर्स, ऑप्शन बी इट इज़ अ डीमैग्नेटाइज, सी द नॉर्थ एंड साउथ पोल चेंज ऑफ पोजिशन, none of the above. You know this question is very interesting. What happened when we hit a magnet with a hammer? It's a gain of more magnetic force. No way. It's a gain of more magnetic force. Nothing. It's a demagnetize. Yes, it is right. But the C is at the north and south pole change position.
No way. This is not a good condition. North south is a pole changes here nothing. It means to D option. B option is correct. B option is correct. It is a demagnetize here. Demagnetize because hit the magnet to hammer. B option is correct for this question. It a demagnetize here. This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you.